she might be upset, but over time, sugar, candy, is an addiction. Children get addicted to it. And so the more they eat it, the more they want. So what happens is that when you say just 3, eventually over about 2 weeks' time, they won't want it so much anymore because the sugar is leaving their system. So try it, see what happens, okay? Thank you. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था मैम का और बहुत कॉमन है। सारे बच्चों को कैंडीज पसंद है, चॉकलेट्स, टॉफीज चाहिए और बच्चों को एडिक्शन सी हो जाती है क्योंकि शुगर में एडिक्शन होती है। अब कंट्रोल तो हमसे भी नहीं होता खैर, पर बच्चों को एक लिमिटेशंस में लाना बहुत ज़रूरी होता है कि आज आपको सिर्फ 2 ही मिलेगी, आपको मिलेगी बस 2 ही मिलेगी। पहले वो गुस्सा होएगा, नाराज होएगा, नहीं मुझे और चाहिए, आई नीड मोर। तो कुछ दिन उसको रेसिस्ट कीजिए आप, धीरे धीरे अपने आप उसकी वो जो ज़रूरत होगी कैंडी की, क्योंकि वो शुगर उसके बॉडी से डिजॉल्व होती जाएगी और अपने आप उसको वो आदत कम होती रहेगी। एनीथिंग एल्स? सर एक और सवाल है यहाँ पर प्लीज। कि बच्चा जो है ये ट्राई एवरीथिंग, सब कुछ कोशिश करता है लेकिन पढ़ाई की तरफ, याद करने की तरफ मन नहीं लगा पाता। अगर वो उसमें लेके बैठता भी है बट कोई आउटपुट नहीं होता। क्या एज कितनी है बच्चे की? एज 14 वर्ष। 14 years. 14 years. That's not actually my age range. I don't know that much about 14-year-olds. But at that age, if he's having trouble, it might be the way he's being asked to learn. Let me tell you a short story. I became a teacher and I wrote all of these books because I couldn't learn. I couldn't read, I couldn't write. I had a very difficult time learning to read. I was about, I think 12, 13, where it got better. But only because my teacher realized that the way she was teaching me wasn't working. And so then started teaching me a different way. So if you're in a school that says this is the only way children learn here, that might leave your child out. What's good about Kinderpillar is it's not just one style. It's not one size fits all. So we look at the children and what they need. So you might want to talk to the teacher and say, this isn't working. We need to find a different way. Good question. बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था आपका। बच्चे की एज अब 14 इयर्स है ना? वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो मेहनत बहुत कर रहा है बट उसका रिजल्ट नहीं है। इसका सिंपल सा जो चीज़ नज़र आती है हमें, वो समझ नहीं पा रहा। जब प्री स्कूल में बच्चा जाता है उसको हम लोग यही समझाते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे समझनी है। जब रोट लर्निंग होती है, ए फॉर एप्पल, बस ए फॉर एप्पल, उसको उतना ही पता, उससे बाहर कुछ नहीं पता। ए फॉर एरोप्लेन भी हो सकता है, ए फॉर कुछ और भी हो सकता है, isn't it? तो उसको वो एनवायरनमेंट मिला नहीं है प्री स्कूल में समझने वाला कि अगर कोई चीज़ है तो उसको मैं किसी तरह समझूं। अब क्या हो रहा है,